Cool. So recording started. Oops. I think by mistake Abhijit removed क्या from my. Let me just check. Just a second. I think by mistake I removed one candidate. I think so. This kind of I got message. Just a second. So first I need to discuss few things. So basically it's related to the project part. So yeah, which I mentioned in the starting of the batch and also in the previous sessions. So basically what we are planning, one full-fledged project, a production level project basically from scratch. Okay, so we finalized two projects here. One is a society marketplace, which is basically maybe I think I given the context previously or not, but let me give you a quickly brief about it. So it's related to in India, if you know, there are societies. Normally in India, there's a culture of there are big societies or small society or even standalone buildings, but I'm talking about in the context of society, where suppose there are 5 buildings, 10 buildings, like आप कह सकते हो wings होती हैं kind of right, 5, 10 depends A B C D A1 A2 something like that. So basically in one society, thousands of people are staying. Okay, hundreds of families are there. Now they have their own WhatsApp groups in which they are sharing their products and services. Those who are doing business, or those are even there are consumers, there are some business people, there are some service provider, all are in that group. So basically again in the WhatsApp group, it's not obviously not manageable properly or not that effective. Daily they have some group rules ki only 1 or 2 message you can post regarding your business. Then people are posting either they are doing some food business, cloth business, or whatever, like there someone providing some law related services, someone providing some software engineering services, production development designing, whatever. Okay, it's like that, or someone providing some car cleaning services, mechanic services, whatever. So the point is, we are planning one project. It is an open source project kind of, again to build our profile and to practice. So it's a kind of similar, like basically you can consider as a urban club and something e-commerce wala angle with the angle of urban club. So it's because it includes service and products both. So there people can actually uh, only for the society people, they can create their accounts as a seller account or a service provider account, and they can sell their services or sell their products. So they can showcase their basically their service and products in the that particular app, and those particular society people or other people, they can just quickly open the app and they can check, okay, what other things are available in our society itself, or what kind of people, business people are doing, or what kind of again service providers are there in different domains. So they can quickly go, they can check category wise, and they can even contact those people, or they can place an order from the app itself. So that is whole again local society based app. Matlab, only those people will use this, but again it's we want to launch it for every society of India kind of. So we'll go with the pilot thing in initially with some few set of societies, and then we can scale it up. So yeah, so it's basically help out right now. They are again managing with the WhatsApp groups and all that. If someone can relate to this, you have that scenario. I have that scenario in my society in Pune. I'm talking about in India. My parents are staying there. I previously used to stay there. Now I'm in Abu Dhabi, but yeah. Uh, Anyone who can relate to this in your friends, family, anyone, you can hand raise or you can give a thumbs up. This society wala thing. Yeah. Tejaswa, Vikram, yeah. Ankur, yeah. Cool. So you can relate to this problem, right? Cool. So basically, again, the point is our main concern is to build something. So we get an opportunity to build something like an e-commerce, something like an urban club. This kind of product we need to build. You will get a proper UI UX soon. We are in discussion with the UI UX team. So basically, you're getting this opportunity to build something, to showcase our, again, to practice out all these programming concepts
or all this iOS stuff which we are actually learning right now. Also, we get an opportunity to build our GitHub profile and our LinkedIn. We can showcase these things, and in our resume also we can showcase these things. So it's a kind of hobby, passion, and open source project which you can showcase, and everyone can showcase on their own, right? So makes good, makes sense. Okay. And the second project we are planning is a matrimony product, and again, it is like a similar of Shadi and Jeevan Sati basically. But yeah, that is not going to be an open source. But yeah, you can involve and you can contribute, and that is again an opportunity to build something like an Shadi.com or Jeevan Sati or even Bharat Matrimony. If you maybe you heard the name or maybe you used also it, maybe you are a user of this app. So again, so this is the another product. So yeah, so we are planning to start within 2 weeks these products, and we'll discuss about the product related stuff more in detail in coming week. And you will get the PRD, you will get the UI UX, and yeah, so that is about. Also, one more thing I am planning. Basically, you heard about this concept of core components. So basically, in my recent company, I'm talking in that context. So we used to build the core components. So what is core component basically? So let me give an example. Like again, consider an app like Instagram or even Zomato or Swiggy. Okay. So basically, what happened in Zomato, if you see, there are some button, there are some disclaimer, there are some animation behavior, something like that, which is basically common in the entire app in the different in the journey of the features. Zomato is all about what food ordering, but if I talk about how can I explain you this thing? So like right now I'm working in a banking for a banking project. So we have like different domains. Like there is a domain of transfers, there is a journey of payments, transfer, then something related to debit card, then covered cards, well, the credit card, debit card. These are two different things. Then we have something like pin generation, card activation. Then you have something like family accounts. Okay. Then you have something related to insurance, loan, home loan, personal loan, auto loans, auto finance, everything like that. So they have different teams basically, and for every team or for every feature journey, they have different feature specific squad teams. We used to call squad. You know about this, I think, and most of the product based companies work like this. So what happened, like suppose you're building, example, take an example, you're building something related to credit card feature, okay, in your app basically. Okay, so credit card related some specific things or screens you will build in your own journey, which is again separate folder, separate screen, separate view controller, whatever it is. Okay, in your or views, like what it depends if you're doing in UI kit or software. But some components are actually whole common in the entire app, which is again I'm talking about. It can be a custom view, it can be a custom button, it can be a custom label, anything, okay, which is easily configurable, generic, and can be used in the entire app, easily configurable. And it can be like make sense ki it is again, we know okay, this kind of component can be used in so many journeys, so many features, like in covered card, like maybe in payments, like maybe in debit card, maybe in some loan application feature, whatever. Okay, but your entire app is actually having so many features, right? In the banking app context I'm talking about. So that components we used to call as a core components. So core components basically common in entire app, and we have maintained a separate folder of this, and then we basically build these kind of components, like again I said, very generic and very easy to configure using stack views, using yeah, mostly stack views I can say. And also consider, you can consider list, stack, and all these things. Okay, so it's very, I will give you some demo in the coming sessions, so you will be able to more relate to it. So we are planning some core component stuff and more core common features as a HDK library kind of thing, and as an experiment part, also in the coming in the as a part of this batch itself. So yeah, again, if you're really interested and you're really passionate and interested, these kind of things you want to explore, you can raise your interest, or you can let me know. So we'll make a different team of this, and then we will work on that part. So even we are planning to try these features, like there is a right now in iOS we used to get a stack of notifications, right?
stack of notification, or you can say live real-time notification you used to see when you place an order in Zomato or in other apps also, Zapto, Blinkit. You will see the real-time delivery updates. You can relate to it, right? Have you observed, right? It's this is recently actually introduced by iOS. Now I think Android also coming with this feature, but initially iOS introduced this, right? So these kind of features, maybe you have already tried, maybe you haven't tried, but yeah, I feel it's really good. Yeah, live activity, I'm saying yes, right, Imran. So these kind of things and so many more stuff which is recently new or which we haven't tried very frequently, but let's try these things and let's build something out of it, and then we can again confidence in these kind of things, and we can again add these things in our resume, and we can showcase in our GitHub and all that thing. So yeah, these kind of thing I'm talking about. So I hope you can getting my point and you can relate this thing. So yeah, so let me know. Well, I will actually share one Google form, one poll for this in a group coming days. So please raise your interest or please register for the same. If you're interested, then we will accordingly will create a team and we'll work on that part. Cool. So yeah, so that's about it. So let me start today's topic. So far, any questions on this which I've talked about? Anyone wants to discuss something? You can raise your hand. Otherwise, we can start the topic. Yeah. So today, let's go to. I'm sharing one Apple. I'm opening one Apple official doc itself. They actually pretty well. They have explained this thing, stack thing in SwiftUI. So I intentionally put their doc itself for explaining this thing. Let me just share my tab. Is my screen visible? Please let me know. Thumbs up. Yeah, thank you. So see, Apple. Yeah, let me close this. Or okay, fine. Okay. So you can. Yep. Okay. So see, again, we normally so many times we have used stack views in UI kit. Okay, it's the kind of same similar concept in SwiftUI. There's no nothing major change. It's just like there is a very less boilerplate code. If you create programmatically stack view in UI kit, there's a lot of code. Lot of name, matlab, you can consider 5 to 6 line of code. Here, hardly like you can directly go and directly you pass an element and the stack is ready. Okay, and you can use it. But in UI kit, if you are going up programmatically stack view, you need to do some stuff. I hope you can relate to it. You normally initialize it, you do some stuff, you add some views, you also provide some again some configuration stuff, and then basically your stack view starts working properly. Right? If you are able to relate it. Anyone in UI kit? But yeah, again, if you're going storyboard XIV, that's a different thing. But I'm talking in the context of programmatically. So there's a less boilerplate here. This is more cleaner, more quickly you can build the things over stack in SwiftUI. Okay. So this is stack only, but right now there three types of stack in UI. Normally we have what horizontal, vertical. They also provided ZStack. Okay, Z is nothing but X axis, Y axis, Z axis. We used to learn these things in our school days, right? Z axis, 3D wala thing. So it's like that only. So horizontal stack is obviously nothing but horizontally you need to align views. For that, there is a HStack, which is horizontal stack. VStack is nothing but for vertical, and ZStack is for basically 3D wala thing. So you want to one view of another, then third one, fourth one, in a layer kind of. Okay, in that hierarchy, in that layer, then you can go for the ZStack if you want to overlay the views, right? So I hope you basic things you may be aware about it already. So that's the very basic example. So there is one example they have given. So I copied already this example in our. So let me go to the export directly. So okay, my screen is not visible to you. Let me share my export. Just a minute. Entire screen. Yeah. Cool. So yeah, my screen is visible, right? Cool. So you can see like I've
just copy pasted this code basically, and let me put this into the picture. Wait, let me cut this code. I will come to this later on, but let me put this as a profile. Okay. See, profile view we are using that, but let's first run this code and see how this actually looks like. Then you can relate. So yeah, just a second. Yeah. So see, there is a, this is basically under ZStack. There is one image view, kind of one image, and there is a bottom. There is a, actually up now you can see the layer. Okay, there is one background view. There is one upfront view on that. This is this one where you can see the name and the design, right? So we'll go into the code. Screen is not visible. Screen is visible, right? Screen is visible. Yeah, screen is visible. You can just maybe quit and rejoin. There is some issue at your end, I think, or maybe a network issue. So you can see my simulator also visible, right? So you can see the whole image, and then there is a overlay, matlab kind of a layer you can say, and then there is a, again, two labels kind of, right? Two text, one name and one is designation. So let's go into the code and see how this is working. So see, there is a ZStack. Let me just see. This is the whole code, which is basically nothing but, this is nothing but this whole thing under the ZStack. Okay. Now you can see there is one image which I said, which is basically the whole background. And this is basically my asset name. You can see in asset name, I have this image with the name of profile picture, this image, right? Which we are using. So again, go to the code, and we made it some aspect ratio resizable. We'll not going into this thing. It's a basic image configuration stuff. Then we have a HStack. Okay, HStack is nothing but horizontal stack, right? Horizontal stack with spacer. Spacer is basically an empty view. If you remember, even in UI kit, we used to do empty view, spacer view, like a normal empty UI view. Maybe you able to relate to it. To balancing out, anyone can raise hand, thumbs up. In UI kit also in stack views, we used to do these things. Empty view as a part of spacer view, kind of, to balance out the stack view basically, right? Or maintain the spacing part. So similarly, they actually here Apple officially provided this spacer thing. Okay, so spacer is nothing but a kind of empty view. So what is happening here? If you see the UI part, so what is happening? This is this now. See this one. This part is whole H stack, horizontal stack, and this is basically one view, and this is a spacer view, which is an empty space. So basically, we need to divide into two parts, 50-50%, right? So basically, what is happening here? I can put a comment here. So this is basically dividing 50-50%. You can say 50-50%. Okay, by using this spacer. So 50% space this is taken, 50% is this whole, you can say. Okay, and now inside there's a vertical stack. Okay, so in between, matlab, they are actually dividing 50%, 50%. Now this vertical stack is nothing but containing two labels, right? Which is nothing but text or two label, you can say, right? Which is nothing but these two labels, right? Which you're passing the name, and again you can pass any font and color, whatever you want. And then you have some padding, and then the foreground color, background color, that is again nothing but the color stuff. You can change this color. I can show you. Suppose I want to change the color to this red, and this may be some green, whatever you can do, nothing matters. So but yeah, so let me just rerun it. We can see this, the below part I've changed, but now it's not readable actually. So this should be, you know, same actually. So because I'm using the invert thing, so then the effect would be good if we now check. See again, but yeah, this opacity and color invert is not working properly. Well, the combination is not going good. But let's go with the back to this. Okay, so point is यहाँ पे कि ZStack providing you the layer part. Okay, that's why you able to put, matlab whole is the ZStack, and then this view basically upside of the ZStack, but again taking less space. Okay, bottom align,
and this vertical stack basically again containing two labels, and 50% space is occupied with that space review, this particular thing. Okay, you getting or relate to it? You can thumbs up once. Nothing complex, very easy. But again, maybe you getting some questions here. So keep your questions again, hold on. You need to go in Xcode and need to try out things. That's the best way to make your understanding more clear. Okay. I'm just giving you some basic example, and obviously we'll come to some complex stuff in the coming sessions. But yeah, before that, you also understand the basic stuff, and also you try it out the things with ZStack, HStack, VStack, or maybe you already used it, or maybe if you haven't explored this thing right now, today or tomorrow, you go and try these things out, right? So yeah, so this is very basic stuff, and now I'm going again with the Apple this doc. So Apple also have their one individual docs on this. Let me quickly open this. So again, Apple just explained, okay, it's a horizontal stack, so nothing but one basic example they have given. A list basically they are passing. You can see here for each loop. And in HStack, whatever elements you're putting, horizontally they basically align. See, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, right? So this is the basically output. Okay. Same thing with the vertical stack. If you're providing any list or any set of number of items, vertically they will actually align. See this one, right? Item 1, item 2, item 3, right? And the same thing with the ZStack. ZStack basically again 3D part of thing, or the Z axis. Okay, to see here you can see again they are iterating the list, and they basically, if you see, they're shifting a bit of this index, you can see. Okay, colors count, and based on color count they are shifting the offset, and based on offset you can see this particular shifting in the rectangle, this particular square of this dimensions, right? So again you can see there is a layer of these fold all the squares, and again the Z stack, the how it works, one, then second, the third one, the fourth one, the fifth one, like a stack basically. Okay, it's very basic, very straightforward. Okay, I hope able to relate. You can just thumbs up once. Very basic thing. Again in UI kit, we very much used to it of the stack views. Same things are here, but again it is more easy, more convenient, more cleaner. Nothing complex as such. But yeah, will move to, or we will try some complex UI views or some complex custom views in the coming sessions. But yeah, so far it is good. The basic stuff. You need to also try some basic stuff today or tomorrow. Okay, so you get a very comfortable with these things. Okay, let me close these things. Now let's move to the navigation with path ones. Okay, let me open the doc. I have this doc. Just a second. Before that, I also want to show one more thing. Let me just do it. One thing I just very basic thing. You want to horizontally, vertically scrollable stuff. So the way we do in scroll views in our UI kit, or we used to do with table view, the same behavior you can get it here. So let me go to the Xcode. I have put it the code here. So basically, where is that code? This code basically I commented out now. Let me just see. Let me first run this, then we'll talk about this, what we are doing here. My screen is visible, right? Yes. So see the output. Here, horizontally scrollable list, you can see item 182, and again I can put into the vertical. So I will simply remove this axis I'm passing here. Again, rerun it once and see the vertical scrollable. Just a second. Okay, sorry. Again, here vertical stack. Now you can see. Okay. So what we are doing basically here, nothing but scroll view. In scroll view, you can part the axis of scroll wala thing. So by default, it is vertical. If I provide horizontal, so it will work like horizontal, which we see previously. And then the stack again, obviously, should be aligned with that. So it will align accordingly. So right now I'm using vertical stack with the vertical stack scroll view axis, and one simple list I'm passing. So that is nothing but normal list, and whatever the elements, again
It's like a table view basically, right? Which we used to see in the first thing. So either you provide through list or like this for each loop, one this whole thing as a one cell kind of, right? So one cell you're configuring, it's a label with some formatting, right? The foreground style, the color, font, frame, and the background, whatever you can provide, right? And then basically this is a whole list of basically your table view, and you're scrolling on the vertical axis. But if you want on horizontal, then simply change V to H and pass the axis to horizontal kind of. Okay, very basic stuff, but just I want to show you the way this, in like in this way you can again basically scrolling things you can implement. But again we'll come to the complex part, like example के लिए मतलब in one table view there's one collection view, and in one collection view there's one more table view, something we used to do in UI kit, right? These views how we can implement in SwiftUI, we will come to that part in the coming sessions. But so far it is good, the basic stuff. Nothing to worry, nothing to as such I think complex. It's very easy, right? So yeah, cool. Now let's go to the navigation part. I'm opening the doc just a second. Other people are able to relate ना, मतलब पता नहीं, only 3-4 people are other people सो तो नहीं रहे, बाकी लोग समझ रहा है, दिख रहा है. You can raise a हाँ थोड़ा फीडबैक देते रहो तो yes, cool, thank you. तो अभी टैब में शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो उस दिन एक्चुअली ये टॉपिक रह गया था. तो हाउ यू कैन प्रोग्रामेटिकली कॉन्फ़िगर योर पाथ्स यूजिंग अ पाथ पैरामीटर, which is nothing but a path is basically a array of strings basically, and based on that value you can you have basically what I can say, you have whole path basically to traverse. ठीक है, auto not detained, right? How we can make it? So you need to first explore this thing on your own, then we'll come to that. Okay, you can explore on your own this thing first. So SwiftUI navigation using path. Okay, so this is nothing but you have a basically nothing but a stack. It's working like a stack. You remember in UI kit we used to do in navigation controller, we have a stack of controllers. We used to push, we used to pull, मतलब pop and push, right? Pop and push, push pop. So suppose if you give an example, suppose you open a Zomato app and you first you have a dashboard, then you click on one restaurant, then there is one restaurant detail controller, you can say restaurant detail screen. Then you suppose again suppose you go in one more screen. Suppose right now basically they're presenting the view, but suppose there is a one more detail screen related to product. Okay, some related to food detail screen. Then there is a kind of a, you see the whole home dashboard. Then there is a restaurant detail screen, then there is a food detail screen, and then you're actually adding add to cart. Suppose take an example. So there are three controller in a line, three screens, and suppose if I pop from food detail, if I coming back, then it comes to restaurant detail, and then again I'm coming back, it comes to the main dashboard, the home, you can say, right? Similarly, you can consider in the Paytm. Suppose you go in the home screen, then you are booking a ticket, suppose bus ticket or flight ticket. Then you again you go in the flight section. Okay, you tap on that. Then there one flight dashboard comes. Then in the flight you just put the details. Then the search screen come, kind of result screen. Then again you want to book. Suppose you're going in one more detail screen, and then you finally booking the ticket, right? So basically we have the whole journey which is maintaining one stack is get maintaining through the your iOS itself, right? So whenever you're coming back, you simply you can pop one screen, but you can customize this behavior, right? We used to customize if we want, but by default one pop means one screen you revert back, right? Normal back navigation. And if you're going forward, normal one push one back. Similarly here also Apple provides this thing in SwiftUI kind of. So you have basically your path, and you have this path basically again add and remove, you can say. So there we have push pop, you can say here add and remove. Okay, so you can see here there is one array you can see here. So here you can see home, documents, projects, and iOS app. So again these four screens you can say they are maintaining, and you can traverse in between. See, so let me just, we can go with one code. Let me just copy paste this. We can go in Xcode and we can see this thing.
Just a second. Yes. I need to share the whole entire screen just a minute. Let me be like this. Yeah. Let me share my entire screen. That would be better. Entire screen. हाँ तो स्क्रीन दिख रहा है ना एंटायर स्क्रीन यस तो बेसिकली लेट्स मूव टू एक्सपोर्ट आई जस्ट कॉपी पेस्टेड दिस कोड एंड लेट मी रन दिस लेट्स सी कि how again this is behaving. Let's first try this. See, now there are basically two buttons. So if I'm going to go to profile, and if I'm go to settings. Okay, so if you see in the code what is happening, there is one navigation stack based on path. So what path is happening? Whenever I'm clicking go to profile, they are adding one path as a label. One basically one value is mapped with the path. Path is nothing but one value for that particular navigation, for that particular you can say screen. ठीक है तो प्रोफाइल स्क्रीन के लिए क्या मैप किया हुआ प्रोफाइल वैल्यू मैप करिए यहाँ पे आप एबीसीडी कुछ भी डाल सकते हैं ऐसा नहीं है ठीक है उससे मैटर नहीं करता बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने वही नाम डाल दिया सिमिलरली दूसरा बटन है सेटिंग स्क्रीन जाने के लिए सेटिंग करके मतलब मैप किया हुआ और जब भी आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे देखो उस क्लिक पे एक नई स्क्रीन खुल रही है और नई स्क्रीन मतलब दोनों के लिए सेम स्क्रीन है डिटेल स्क्रीन उसके अंदर जो दिख रहा है आपको वो वैल्यू यहीं से पास कर रहा है वो तो वो वैल्यू आपको इसमें मिलती है वो वैल्यू यहाँ पे स्क्रीन कॉलन और यहाँ पे दिखा देता है तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्हाट इज हैपनिंग है गो टू प्रोफाइल में स्क्रीन प्रोफाइल ये आ रहा है लिखा हुआ ये उसी वजह से आ रहा है क्योंकि वैल्यू वहां से पास हो रही है राइट वो वैल्यू उसको यहाँ से मिल रही है राइट वही वैल्यू हम यहाँ पे दिखा रहे हैं अगर यहाँ मैं एबीसीडी कर दूंगा तो यहाँ एबीसीडी आएगा राइट तो बेसिकली आप पाथ या वैल्यू भी मेंटेन हो रही है उससे और आप पाथ मेंटेन कर रहे हो तो वो बैक नेविगेशन और आपका फॉरवर्ड नेविगेशन यस शग्रफ सर कोई और अगर डेटा पास करना कर सकते हो अलाउड है ठीक है कस्टम डेटा यू कैन पास उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यू कैन पास योर कस्टम क्लास कस्टम स्ट्रक्ट सॉरी मतलब व्हाटएवर यू कैन पास इट तो अभी ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है स्ट्रिंग के साथ बट अगेन ऑब्वियसली यू गो विद द कस्टम डेटा कोई दिक्कत नहीं है ये शग्रफ ये सिमरन Kushal, suppose there are we push 3 view in the view Sorry? hierarchy or 5. Suppose we push 5 view in the view hierarchy. Yeah. And from last view, I want to jump to the second last, not second last. You can so do that. Third one. So Yes. how we can achieve this one? Custom back navigation, the way we implement in UI kit, similar kind of approach here also. But again मैं कहूँगा आप खुद से एक बार ट्राई करो वेरी इजी वैसे ही टाइप में है वहां पे हम क्या करते थे मैं बता दूं यूआई किट में व्हाट वी यूज्ड टू डू हमारे पास स्टैक ऑफ कंट्रोलर होता था वी यूज्ड टू फाइंड कि डायरेक्टली उस पे पॉप टू दिस काइंड ऑफ कंट्रोलर एक तरीका फंक्शन होता था उस पे हम यूज करते थे एंड वी पास दैट राइट सिमिलरली हियर आल्सो यू कैन डू दिस थिंग ठीक है सिंपली जस्ट you can try or google it you will find this for that one we have to write custom code right obviously custom code is required because by default they provide you again normal push and pop the way in UI kit normal back to works like that but if you want a custom behavior we used to write this code right similarly here also for custom behavior you need to configure the way the things like this okay got it तो लेट्स मूव टू अगेन द डॉग पार्ट तो अभी ये बेसिक हमने देखा अब इसमें कैसा है पॉप मान लो आपको पूरा ही पॉप करना है रूट पे आना जैसे अभी मान लो अभी इमरान इज सेइंग कि कम टू द सेकंड कंट्रोलर पर सपोज नॉट सेकंड आई नीड टू कम फ्रॉम फिफ्थ स्क्रीन टू डायरेक्ट द फर्स्ट स्क्रीन ठीक है तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली यूज दिस पाथ रिमूव ऑल ठीक है आपने पूरा स्टैक ही खाली कर दिया इफ यू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द स्टैक देन ऑब्वियसली यू मूव टू द रूट कंट्रोलर रूट इज नथिंग बट योर होम कंट्रोलर और योर फर्स्ट स्क्रीन बेसिकली फर्स्ट कंट्रोलर राइट
ठीक है। उसके बाद देखो अभी जैसे बोल रहे थे कस्टम डेटा टाइप यू कैन पास, सी Shagraf, you're asking these things, right? तो here you can see कस्टम डेटा यू कैन पास, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसमें आप कुछ भी डाल दो, राइट? एक बार कोई कस्टम क्लास या ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है, इसका मतलब आप कुछ भी भेज सकते हो, एनीथिंग यू कैन पास, राइट? तो वहां पे स्ट्रिंग एरे था, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन एरे ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन टाइप ऑफ स्ट्रक्ट। स्क्रीन इज नथिंग बट अ कस्टम स्ट्रक्ट, राइट? इट्स अ कस्टम डेटा टाइप। सो इस डेटा टाइप का एरे हमने बिल्ड किया एंड देन अगेन वी आर यूजिंग इट लाइक अ डेटा पासिंग। तो इसमें एक आईडी भी पास हो रही है और एक टाइटल भी जा रहा है, दोनों मेंटेन हो रहे हैं, राइट? तो इन दिस वे वी कैन पास कस्टम डेटा। तो आप कुछ भी कस्टम डेटा यहाँ पे एनीथिंग यू कैन पास बेसिकली, नथिंग टू वरी। आज शुड बी हैशेबल, ये मैं बोलूंगा, आप इस पे देखो, खुद जाके एक बार देखो कि हैशेबल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, ये दो एंगल है अलग अलग। अभी सब स्ट्रिंग में देख रहे थे, वहां अलग कंटेक्स्ट था। नाउ दे एक्चुअली क्रिएटेड दिस कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, दिस कस्टम डेटा टाइप। इसमें इन्होंने ये आईडी इंट्रोड्यूस कर दिया और हैशेबल बना दिया इसको। बट अगेन ये जेन्युइनली रिक्वायर्ड है या नहीं, दैट यू नीड टू लुक इनटू इट वंस। हाँ विक्रम, यू हैव एनी क्वेश्चन? विक्रम, मैं एक्चुअली यस, वो स्क्रीन अभी जो आपने बनाया तो उसमें कोई व्यू कंट्रोलर का एग्जांपल है अपने पास, जस्ट लाइक व्यू कंट्रोलर का अभी तो कोड बेस नहीं है, यूआई किट में नॉर्मल व्यू कंट्रोलर करती है, राइट? पुश पॉप, वही अभी हम देख रहे हैं, वेरी बेसिक स्टफ। वो एक्चुअली तो समझ रहा हूँ, उसमें ये स्क्रीन है जस्ट लाइक अभी, ठीक है? तो उसके अंदर ये हाँ मेरे को व्यू, ये बॉडी सम व्यू करके व्यू एक बनाना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही जस्ट हाँ, लाइक ये ये तो। डिटेल्स जैसे कैसा हो रहा है स्विफ्ट यूआई में ना, इतना तामझाम नहीं है। स्विफ्ट यूआई में आपका ऐसा समझो, ये जो कोड दिख रहा है हाँ यही आपका वो डिटेल स्क्रीन का कोड है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। दिस इज नथिंग बट योर डिटेल स्क्रीन कह लो या सेकंड स्क्रीन का कोड यही है। अब यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो मेरा डिटेल स्क्रीन का कोड। अब यहाँ पे आप चाहो तो पूरा एक कस्टम व्यू अपना, अभी तो कुछ भी नहीं, एक लेबल दिख रही है बेसिकली, राइट? हाँ डिटेल हाँ। स्क्रीन पे कुछ है ही नहीं, एक लेबल है। पर मान लो उस पर मुझे पूरा तामझाम दिखाना है, बहुत कुछ है इस पे, तो वो हम्म। सारा बना के मैं एक अलग क्लास में बनाऊंगा, वो लिखूंगा सारा ओके, कोड, यहाँ पे मैं उसको कॉल कर दूंगा सिंपली, राइट? परफेक्ट, समझ गया, यस, थैंक ठीक यू, है, perfect। गॉट इट, या। तो हाँ, आपका क्वेश्चन ऐसे सही था। फर्स्ट टाइम मेरे को भी कंफ्यूज किया था जब मैंने स्विफ्ट इनिशियली देखा था, हम्म। क्योंकि कंफ्यूज करता है, क्योंकि यूआई किट में हमारी आदत नहीं है ना ऐसा कि चीज हाँ देखने की, वही वही, यस। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ हाँ, और किसी ने हैंड रेज किया? नहीं, कौन है? हाँ, दिलीप? यस कुशल, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ जी। से व्यू कंट्रोलर की लाइफ साइकिल चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें व्यू कंट्रोलर तो होता नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था कि व्यू नीड व्यू। कंट्रोलर नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे इनकी व्यू की लाइफ साइकिल है जो अपन ने देखी थी। तो जी इनका जी। इनिट कॉल होगा, इनका बॉडी कॉल होगा, राइट? इनिट और बॉडी वाला चीज हमने देखा था। हाँ हाँ। और इसके इसका भी डिड अपीयर और वो है ऑन अपीयर और डिड अपीयर वाला चीज, राइट? तो और अगर डिसअपीयर ऑन अपीयर वाला, मतलब अपीयर और डिसअपीयर, राइट? वो मुझे अगर चेक करना हो तो कहीं कोड लिखना पड़ेगा या फिर वो कैसे हाँ, बन लिखना जाएगा? पड़ेगा, राइट? जैसे हम लोग यूआई किट में भी वो फंक्शंस लिखते हैं, तभी तो उसमें लॉग लगा सकते हो या कोड कर सकते हो, राइट? करेक्ट वैसे ही हमें करेक्ट। लिखना पड़ेगा, जैसे हमने उस दिन भी किया था ना वो। आप यहाँ पे सिंपली, मैं यहाँ पे समथिंग लिख सकता हूँ, राइट? ऑन अपीयर, ये देखो, ठीक है? यहाँ पे मैं लॉग लिख दूंगा तो अभी प्रिंट कर देगा वो। यहाँ मैं कह सकता हूँ ऑन अपीयर कॉल्ड, ठीक है? इस तरीके से आप अगेन यहाँ पे एक डिसअपीयर का भी ऐड कर दो। और इनिट अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आपको इसका इनिट लिखना पड़ेगा, राइट? तो इसका इनिट यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ इनिट आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से फिर यहाँ पे मुझे जो करना है मैं यहाँ कर सकता हूँ, जहाँ मुझे लॉग लगाना है कुछ भी लगा सकता हूँ, राइट? इस तरीके से आप इनिट लिखो, आप अपीयर डिसअपीयर लिखो। फिर अभी तो डिटेल स्क्रीन में यहाँ एक टेक्स्ट पास कर दिया है, पर मान लो यहाँ मैं कोई कस्टम व्यू पास कर रहा हूँ, उस कस्टम व्यू में जाके मैं उसका इनिट लिख दूंगा, उसके बॉडी में भी लॉग लगा दूंगा, और यहाँ पे भी इस बॉडी में यहाँ पे लॉग लगा दूंगा, राइट? तो इस तरीके से। ठीक ठीक है, ठीक, समझ यस गया। यस, या हाँ, थैंक्स। हाँ शिक्षित, यू हैव एनी क्वेश्चन? हाय सुषम, मेरे को पूछना है, आप इसमें पाथ का ये एरे बना के प्रिंट क्यों कर रहे हैं इसमें, मुझे समझ नहीं आया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ मैं हेलो, हाँ बोलिए।
जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ इसमें ये पाथ का अपने एरे बनाया और उस पे अपेंड क्यों करा है, मतलब वो चीज समझ नहीं आई। अपेंड इज नथिंग बट, पाथ कैसे वर्क करता है, जब भी आप कुछ अपेंड कर रहे हो तो आप उसको बता रहे हो कि आगे के पाथ के लिए आप उसको काइंड ऑफ पुश कर रहे हो बेसिकली, और जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो मतलब मैं पॉप कर रहा हूँ, इस तरीके से वर्क करता है वो। तो आप देखोगे अच्छा, जब मतलब भी मैं यहाँ पे कोड में देख रहा हूँ, जब भी मैं उस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, गो टू प्रोफाइल बटन है अपना, वो क्लिक करते ही यहाँ पे कॉल बैक आएगा, ये बटन का कॉल बैक फंक्शन है। तो क्लिक करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं अपेंड कर रहा हूँ। अपेंड का मतलब मैंने उसको बोला कि भाई इस पाथ पे चले जाओ, इसका कहने का पॉइंट ये है, मतलब नेक्स्ट पाथ ये है मेरा जाने का। और ये कैसे वर्क करता है, जब ये आप पाथ इसको अपेंड करते हो ना, तो फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन में कॉल बैक आता है। डेस्टिनेशन वो चेक करते हो कि इस वैल्यू के लिए कुछ पाथ है कि वो अंदर जाएगा, अंदर जाके वो इस व्यू पे चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है वो। सिमिलरली आप बोलोगे कि भाई अभी तो यहाँ पे मैंने कस्टम बैक का कोड नहीं लिखा है, बट अभी डिफॉल्ट जैसे मैंने बोला बाय डिफॉल्ट बैक नेविगेशन चल रहा है आपका, पर आपको कस्टम कुछ अपना नेविगेशन करना है, यू कैन इंप्लीमेंट दैट थिंग। तो अपेंड का मतलब नथिंग बट आप उसको अगला बात बता रहे हो कि ओके, अब मान लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, प्रोफाइल की जगह मैं यहाँ सेटिंग्स कर दूँ और यहाँ पे मैं अगर प्रोफाइल कर दूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा बिहेवियर। ठीक है, अभी रन कर लो आप इसको सिंपली, और अभी तो चलो सेम ही स्क्रीन है और सेम वो एक लेबल दिख रही है, तो उससे ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। और अब देखो गो टू प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेटिंग्स खुल रहा है, और अगर सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा तो प्रोफाइल खुल रहा है। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने पाथ ही फ्लिप कर दिया। मैंने गो टू प्रोफाइल के टैब पे बोल दिया कि भाई सेटिंग स्क्रीन पे चले जाओ, और सेटिंग स्क्रीन के बटन पे बोल दिया प्रोफाइल स्क्रीन पे चले जाओ। राइट, तो ये वर्क कैसे करता है, उसका बिहेवियर फ्लो ध्यान रखो। पाथ में जब भी आप कुछ अपेंड करते हो, वो अपेंड होने के बाद यहाँ पे कॉल बैक आता है डेस्टिनेशन में, और वहां पे अगर आपका ये वैल्यू के लिए चीजें मैप, अभी क्या हो रहा है, हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी आएगी तो उसमें जाएगा अंदर। ठीक है, पहली बात ये। अब मान लो अगर आप कोई और डेटा टाइप दूसरा भेजते हो तो आपको अलग से वापस इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे फिर अलग डेटा टाइप होगा, मान लो इंट होगा। ठीक है, और फिर आप वहां से इंट का कुछ टाइप भेज रहे हो तो इंट के लिए चेक करेगा कुछ है क्या कोड, तो वो अंदर जाएगा और वो नेविगेट करेगा। अगर नहीं है, मान लो स्ट्रिंग और इंट के अलावा कुछ आप भेज रहे हो, मान लो कि आप बूलियन भेज रहे हो, अब बूलियन यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है सच, तो वो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नेविगेशन नहीं होगा, फिर बस क्लिक करोगे कुछ होगा नहीं, फिर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ पा रहे हो इसको। ठीक है। तो बेस्ड ऑन बट डेटा ये चीजें मैप्ड है आपकी, वो चीजें ओके, अगर सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगर है क्या, तो वो आगे मूव करेगा और कोड कॉल होगा और वो आगे सेकंड व्यू का आ जाएगा काइंड ऑफ। नहीं है कुछ भी तो भाई वो वहीं रहेगा सिंपल। ठीक है। बट जैसे हम लोग यूआई किट पे करते हैं ना कि कंट्रोलर का नाम देते हैं जब हमें नेविगेट करना यहाँ होता है। पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैसा, अच्छा, ये यहाँ आप थोड़ा स्ट्रिंग अलग। के बेसिस पे कर रहे हो। हाँ, बेस्ड ऑन, देखो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रिंग, मतलब बेस्ड ऑन आप कस्टम डेटा टाइप कस्टम वैल्यू के बेसिस पे हम करते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ। ठीक, और यहाँ सब प्योरली प्रोग्रामेटिकली पहली चीज। दूसरा वहाँ पे हम लोग अगेन ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग कंट्रोलर का क्लास बना के काइंड ऑफ पुश करते थे। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आपको देख रहे होंगे आप ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ रहा है काइंड ऑफ, यहाँ पे अलग से सब पुश नहीं करना पड़ रहा है, पर बेसिकली वो पाथ आपको वही बिहेवियर देने का ट्राई कर रहा है। जब भी मैं पाथ में कुछ डाल रहा हूँ उसका मतलब मैं पुश करने को बोल रहा हूँ उसको उसकी, पर हाँ वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर उसमें मान लो किसी ने घपला कर दिया तो वो ढंग से वर्क नहीं करेगा। इन केस इफ यू पास रॉन्ग वैल्यूज इनटू मतलब इन दैट फंक्शन नेविगेट डेस्टिनेशन, अगर वो ढंग से कोड यहाँ पे लिखा नहीं है आपने, अगर इस कोड में कोई झोल है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। अभी तो सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने मान लो डेटा टाइप गलती से बदल दिया, यहाँ पे गलती से आपने इंट वैल्यू पास कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच अलग है, ये आप कह सकते हो। यूआई किट और सॉफ्टवेयर में थोड़ा डिफरेंस है, पर नॉर्मली आप थोड़ा सा यूज करोगे यूज टू हो जाओगे, फिर आपको नॉर्मली लगेगा। अभी पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है ये इनिशियली देखने में। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन। थैंक्स। तो आई होप ये समझ पा रहे हो आप लोग पाथ वाली चीज। ठीक है, तो इसका फ्लो बस इतना ही मैं अगेन रिपीट करूंगा। फ्लो वाइज थोड़ा ध्यान रखो, बहुत बेसिक है, मैं समझ पा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जाता है चीज, पर इसको ऐसे ध्यान रखो। देखो मैंने तो उसको ऐसे ही समझा था कि पाथ कैसे वर्क कर रहा है। जब भी मैं कुछ अपेंड कर रहा हूँ उसका मतलब मैं यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ। ये अपेंड मतलब यहाँ पे सिंपली मैं इसको बोल रहा हूँ पुश करो, पुश माय मतलब चाइल्ड कंट्रोलर, जैसे हम यूआई की भाषा में कह रहा हूँ इसको। पर ये तभी वर्क करेगा, मेक श्योर ये आपका यहाँ पे डिपेंडेंट है सारा। और जब भी आप अपेंड करते हो ना तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, आफ्टर अपेंडिंग कॉल बैक गोस टू नेविगेशन डेस्टिनेशन, इसमें कॉल बैक जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो आप, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कॉल बैक जाएगा
और यहाँ पे मैं एक और कमेंट डालता हूँ, इफ थिंग्स आर कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली, if things are configured properly for that specific data type or value, then it navigates, else not. ठीक है, समथिंग लाइक दैट मैं कह रहा हूँ। अगर कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली है तो वो नेविगेट करेगा, वरना वो नहीं करेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो अभी तो कर रहा है, पर इसमें कुछ होल करोगे तो नहीं करेगा। दूसरा, अब मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं स्ट्रिंग में भी मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक स्विच केस लगा सकता हूँ यहाँ पे, राइट, और बेस्ड ऑन जो वैल्यू मुझे आ रही है उस बेसिस पे मैं अलग अलग स्क्रीन पे भेज सकता हूँ उसको, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप वैल्यू के बेसिस पे करो, आप डेटा टाइप के बेसिस पे करो, वो आपके ऊपर, मतलब कंप्लीटली योर कॉल कि आपको कैसी चीजें कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है एप्पल ने आपको। बस ये पाथ का कॉन्सेप्ट समझ के रखो। इस पाथ में जैसे हमने देखा कस्टम डेटा भी, वो जो आप देख पा रहे हो, ये जो कोड था यहाँ पे, आप चाहो तो इसमें किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, राइट। तो ये आपके ऊपर है पूरा कंप्लीटली किस टाइप का ऑब्जेक्ट भेजना हो, फिर उसको आगे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप नेविगेशन डेस्टिनेशन में स्क्रीन टाइप का ऑब्जेक्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा है और उसी के लिए कॉन्फ़िगर किया। अब मैं अगर यहाँ गलती से स्ट्रिंग ही भेज दूं, यहाँ पे अगर मैं ये पूरा हटा के स्ट्रिंग भेज दूं यहाँ पे, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, राइट। तो पॉइंट ये है। और हमने पाथ को डिफाइन भी किया कि एसी का है, तो एक्चुअली वो तो लेगा ही नहीं, पाथ ऑलरेडी डिफाइंड एसी डेटा टाइप का, राइट। तो ये भी चीज है, तो ये बात है। ठीक है, मेक श्योर करो क्या वही भेज रहे हो जो एक्सपेक्टेड है और उसके लिए चीजें कॉन्फ़िगर करी हुई है, बस इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। तो बहुत ईजी, एक्चुअली ज्यादा तामझाम नहीं है, बस ये कि हाँ इस तरह के चीज से हम एक्चुअली नॉर्मली यूज टू नहीं है, इट्स वेरी न्यू टू अस। मतलब क्योंकि यूआई किट में हमारा दिमाग वैसे ही चलता है आज भी, कि हम लोग यूआई किट में सिंपली ऑब्जेक्ट बनाते थे, चाइल्ड कंट्रोलर जो भी था हमारा नेक्स्ट स्क्रीन का, और उसको उठा के फेंक के पुश कर देते थे या प्रेजेंट कर देते थे, राइट। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है थोड़ा सा, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये बहुत यूज टू हो जाओगे धीरे धीरे आप, इट्स वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, तो पाथ पावरफुल क्यों है, इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है कि यहाँ पे आप डेटा के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो प्रॉपर्ली। नेविगेशन, बैक नेविगेशन बाय डिफॉल्ट तो चल रहा है, फिर उसमें आप चाहो तो रिमूव ऑल करके रूट पे आ जाओ, रिमूव लास्ट करोगे तो पीछे आ जाएगा। ठीक है, उस टाइप से चीजें। डीप लिंकिंग भी डाल सकते हो, डीप लिंकिंग में बाद में आएंगे, अभी मैं उस पर वो कवर नहीं किया है। फिर मल्टी लेवल नेविगेशन भी है, तो जैसे मैंने बोला बेस्ड ऑन वैल्यूज के हिसाब से आप अपने नेविगेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा पहले खुद से ट्राई करना, अगले सेशन में इसका एग्जांपल भी ले लूंगा एक। ठीक है, पर एक बार खुद से ट्राई करो, मजा आएगा, बहुत ईजी है। उसी में जैसे मैंने बोला ना, वहां पे आप चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर वैल्यू, कौन सी वैल्यू, उस वैल्यू के लिए यू कैन मैप योर चाइल्ड कंट्रोलर, योर कस्टम व्यू बेसिकली। ठीक है, और योर कस्टम स्क्रीन और योर नेक्स्ट स्क्रीन बेसिकली। ठीक है, वो चीज है। और ये हैशेबल कोडेबल का क्या सीन है, ये इस पे हम अगले सेशन में देखेंगे। पर तब तक के लिए आप लोग भी एक बार खुद से ये चीज थोड़ा सा गूगल करोगे, यू विल फाइंड आउट इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, और देन वी विल डिस्कस ऑन दिस कि व्हाई हैशेबल और कोडेबल इज रिकमेंडेड और व्हाई नॉट रिकमेंडेड, और क्यों लोग उसको ऐड करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज पे फुल मेक सेंस। तो ठीक है, आगे वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं चाहूंगा वो आप लोग पहले खुद से भी एक्सप्लोर करो, तो ज्यादा सेंस बनेगा उस चीज को डिस्कस करने का। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे फिर रुक सकते हैं। बेसिक पाथ नेविगेशन कॉन्फ़िगरेशन देखा है हम लोगों ने, और नॉर्मल आपका स्टैक वाली चीजें देखी है। स्टैक आपका वही है, अगेन इट्स वेरी सिमिलर टू यूआई किट, जो कि आपको हॉरिजॉन्टली आप करते हो। उसी में अगर मान लो आपको स्क्रॉलेबल चाहिए तो आपने सिंपली उसको स्क्रॉल व्यू में डाल दिया, उसका एक्सेस डिसाइड कर लो, अंदर आपका आप हॉरिजॉन्टल स्टैक डालो, वर्टिकल डालो, आपके ऊपर है। ठीक है, अगेन ये बहुत वेरी बेसिक चीज है, मैं ये भी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब इससे आप बहुत कॉम्प्लेक्स वे बना लो, उसके लिए थोड़ा अलग चीजें आपको और करनी पड़ेंगी, बट अभी के लिए वेरी बेसिक ही समझेंगे हम, पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो वेरी बेसिक तो क्लियर है, कुछ अभी तक दिक्कत जितना देखा थम्स अप कर सकते हो बाकी लोग, एवरीवन। ठीक है, आगे कॉम्प्लेक्स चीज पे भी आएंगे, पर पहले आप भी बेसिक के साथ कंफर्टेबल हो जाओ पहले। ठीक है, सो डैट आपको डर नहीं लगना चाहिए, जैसे स्विफ्ट एक खौफ है दिमाग में लोगों के, वो खौफ और ये वो जो डर है ना, वो पहले निकलना जरूरी है, फिर हम उसमें आगे चीजें मतलब और बढ़िया चीजें कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें, कुछ भी ऊट पटांग चीजें, दैट वी विल ट्राई। ठीक है, और उस पर आएंगे हम लोग, पर पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ के लो, बेसिक चीजें करो, कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद वो चीजें करो, मेक मोर सेंस। ठीक है, राइट, ओके। तो आज के लिए हम रुकते हैं फिर यहीं पे, और अगला सेशन हम लोग मोस्टली मंडे
तो नहीं, सॉरी, ट्यूसडे वेडनेसडे को विल प्लान। तो 1-2 दिन का वो रहेगा गैप। 1 सेकंड होल्ड करना, आई थिंक डिलीवरी बॉय। हेलो, जस्ट होल्ड लो। हेलो, सॉरी, आई थिंक रॉन्ग। या तो ठीक है, तो आई होप अभी क्या कर सकते हैं हम, अगेन आपका जो असाइनमेंट चल रहा है, ट्राई आउट दीज थिंग्स। उसमें स्टैक के साथ खेलो आप, नेविगेशन आप ऑलरेडी उसमें कर ही रहे होंगे, उसमें आप पाथ वाला यूज करना नेविगेशन। अभी हो सकता है नेविगेशन लिंक के साथ ही खेल रहे होंगे, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ट्राई विथ पाथ नेविगेशन, ओके एवरीवन, इमरान और जो भी आप लोग जो भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, शगराफ एंड एवरीवन। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा असाइनमेंट्स के लिए प्लीज टाइम निकालो, ठीक है, इट्स हाईली रिकमेंडेड। तभी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ सेशन सुन के या देख के नहीं आएगा, ठीक है। ये सीरियसली बता रहा हूं मैं, इस बात को समझने का ट्राई करना। जब तक खुद से कोडिंग नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये सारा थ्योरेटिकल और ये सुनने का सेंस का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो मेक श्योर अगर आपको जनरली चाहते हो अपना टाइम जो हम दे रहे हैं यहाँ इतना, वो टाइम, वो एफर्ट, वो सब कुछ यूज हो, तो प्लीज आप थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली असाइनमेंट्स को थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से चीजें थोड़ी ट्राई करो, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी, ठीक है। कैन वी फ्री सम स्पेस? नहीं, सेटिंग्स का यार पता नहीं, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, आई नीड टू चेक। कोई किसी को आइडिया इस चीज का, जो अंकुश पूछ रहे हैं, तो यू कैन आंसर इट और ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आई डोंट थिंक सो सिस्टम में से आप कुछ निकाल सकते हो, वो ओएस का पार्ट है। बाकी आप अपने जो एप्लीकेशन, आपने खुद के जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे इवन एक्सकोड का एग्जांपल ले लो, एक्सकोड बहुत सारा स्पेस ले लेता, दैट यू कैन क्लीन अप, ठीक है। उस तरीके से यू कैन क्लीन कर सकते हो आप चीजें। हाँ गौरव, ओके, आप लोग शेयर कर सकते हो ग्रुप पे या आपस में, जो भी है, ठीक है, कूल, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन वी आर प्लानिंग ऑन मे बी ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो यू हैव 2 to 3 days ऑफ टाइम। मेक श्योर असाइनमेंट जाके आप करो थोड़ा, और प्रैक्टिस करो इन चीजों की जो आज हमने टॉपिक्स लिए हैं। एंड हम लोग कमिंग सेशंस में कस्टम और उसमें कॉम्प्लेक्स चीजों में जाएंगे, और उसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेक श्योर, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक ये चीजें कवर कर रहा हूँ पहले, जिससे कि हम लोग जब प्रोजेक्ट एक्चुअल करें तो थोड़ा बेसिक आपका एक ओवरव्यू चीजें बन जाए SwiftUI को लेके भी, और एपीआई कॉलिंग भी, ये सब हमने Async वगैरह देखा था, और अभी आगे कंबाइन भी हम लेंगे। तो ये सारा होने के बाद ना, फिर अपन जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो सेंस बनेगा ज्यादा, और उसी में हम लोग अभी आगे डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स भी लेने वाले हैं। तो ये सारा चीज जब पूरा एंगल को हम कवर करेंगे और जब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो मजा भी आएगा, आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, कूल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।